सर्वे म्यूट भवन्तु। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्या जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमो वः। सम्प्रति अच्सन्देहे अभ्यासं वयं कुर्वन्तः स्मः। गतवर्गे पररूपसन्देहे अभ्यासः आरब्धम्। इदानीं कोऽपि वदतु पररूपसन्देहे उत्सर्गसूत्रं किम्? द मेन् सूत्र ऑफ पररूपसन्धि। एङ्गी पररूपम्। किं वदति इदं सूत्रम्? अच् संधिमध्ये यदा ए ओ ऐ औ परे अस्ति चेत् पररूपसन्धि भवति। पुनः एकवारं। आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। If ing pratyahar is there, so what varnas are included in the eng pratyahar? A-O varna, not yeah. Engi pararupam. A and O, if it is there, then pararup sandhi will be there. कस्मात् वर्णात् परः एङ् वर्णः स्यात्? अच वर्णात् परः। पुनः एकवारं। किसके बाद एंग वर्ण से आने वाले धातु हो सकते हैं? अत वर्ण परे। अच वर्ण परे। अत अवर्णात् परे। अवर्णात्। पुनः कीदृशस्य अवर्णस्य उपसर्गात्। अवर्णात् उपसर्गात् परे यदा एङ्गादि धातवः आगच्छन्ति तर्हि तयोः मध्ये उभयोः वर्णयोः मध्ये पररूप एकादेशः भवति। दिस इज द बेसिक सूत्र ऑफ पररूप संधि। तथापि केचन विशेष नियमान् अस्माभिः अधीतं खलु? कोऽपि जानाति वा? एकैकं कृत्वा upa plus edi comes to, it will be upaidi, it will become vriddhi, not pararupa sandhi. Upaidi we studied, that is one thing. That is ed dhatu, then one more dhatu, sir. Yela varum. No, one more. Forgot. Plus edati. Also there, also the edi varumbodhu, it will be pararupa sandhi oda apavadam, it will become this is vriddhi sandhi. One more is there, sir, I forgot it. and that where the upa plus that ed dhatu plus this thing. Upaidi it will become,
That is Vriddhi Sandhi. So it is Apavadam to the Purva Rupa Sandhi. After that, Viskiti also. No, there is a minor difference between what you are telling is the Vriddhi Sandhi. Upa and Eti, that is an apavada of Vriddhi Sandhi. But Pararup Sandhi, in that case, it was Ingatau Dhatu. Only two dhatus are there. Upa and Edha Dhatu. Upa, Akarat Sarge Ingatau Dhatu and Edhati Edha Dhatu. Only two dhatus were there. But here, Upasarga, Avarnat Upasargat Pare, Ekaradi Dhatu. Ekaradi Dhatu and Okaradi Dhatu. Starting with Ekara and Okara. that is Pararupa Sandhi, no? Exactly. Yeah, Upa, Para, like that. Only very few Akara No, and Upa and Eti will become Upaiti, Yeah, not Upeti. correct. Vriddhi So होता है. this is, हाँ, तो वो उसका ये इसी का वो अपवाद है. ओह, अच्छा, उल्टा पकड़ ये लिया. साधारण रूप में अवर्णात परे यदा एति इज व्हाट धातु इज इणगतो धातु. इनका तो होता तो. हाँ, तो इसीलिए उपवाद करके इसमें आता है. चकान्तादिषु पररूपम. और इणगतो धातु में एति एशी एमी केवल 3 रूप में ही आएगा, क्योंकि इणगतो धातु में 3 रूप में ही एकार होता है. इतना होता है क्या? तो इसीलिए धातु इणगतो धातु एंड एदति धातु. विकल्पेन नाम धातु अस्ति चेत्. विकल्पेन अपि नाम धातु, दिस इज फॉर द वृद्धि आदेश, वृद्धि रसंधि. उपसर्गात् रीति धातो, दिस इज वृद्धि अपवाद. एंड नाम धातु अस्ति चेत् विकल्पेन वृद्धि अपि भवति, गुण अपि भवति. परंतु अत्र पररूपो अस्ति. पररूपे किम् अस्ति? अवर्णात् उपसर्गात् परे यदा एकारादि धातु अस्ति अथवा ओकारादि धातु अस्ति तर्हि पररूप संधि नित्यमेव भवति. बट इफ द धातु इज द नाम धातु, देन ऑप्शनली भवति. ऑप्शनली वा विकल्पेन भवति. Similarly, what we had studied with the rikaradi dhatu in the Vriddhi Sandhi, whereas the Nam dhatu starting with a rikara will have an optional adesha, and here similarly the Nam dhatu starting with an ekara or an okara will have an optional pararup adesha. Only this dhatu only. Nam dhatu. First, if it is the original dhatu, if it is Panini dhatu, Aupadeshik dhatu, it will always have an this pararup sandhi. But if it is a Nam dhatu means what? Can anyone explain what is Nam dhatu? Is again dhatu. Kamyach pratyaya added. हाँ, एकम Kamyach pratyaya added. Not keval kamyach. No, keval kamyach na. Sananta dhatu, sir. Twelve vrittis na Sanadaya. sanadaya vritti. Sanya. Atideshik dhatu. Atideshik dhatu, the dhatu which we are getting by adding a sanadi pratyaya to a pratipadikam. That is called a nam dhatu. Because we are getting a atideshik dhatu by adding sanadi pratyaya to the aupadeshik dhatu also, which is not a nam dhatu. But we are getting the new dhatu, which is a nam dhatu, what we are getting by adding a sanadi pratyaya to a pratipadikam. Like putra plus kyach putriya, shena plus kyang shenaya. This shena is a pratipadikam. Putra is a pratipadikam. But a patha plus nich, pathi, it is a upadeshik dhatu, but it is not a nam dhatu. It is an atideshik dhatu. So
This is the difference you have to. Not all dhatus are naam dhatus. So नाम धातु प्रातिपदिकम plus. हाँ सनादि प्रत्यय. Okay, sir. Putra plus kamyat, sir. पुत्र काम्य. Yeah, that is also it forms हाँ dhatu. हाँ हाँ. The one who desires of having a son, putra kamyate. Yesterday only I studied in Ashtadhyayi, that sutra. That's the moment who has issued a chat box. अस्तु. अन्य कोऽपि? प्र प्लस एजते प्रेजते. प्र प्लस एधते प्रेधते. Okay, and not praidhate. Pra and ejate, it should have an vruddhi. Avarnat pare yada h varnah agacchati chet vruddhi bhavati. इति वयं पठितवन्तः. परन्तु अत्र वृद्धि अपवाद बाधित्वा अयं पररूपः एकादेशः कृतः. So pararup vruddhi adesha has been cancelled by this pararupa sandhi. Sir, pra plus edate praidate only, no, sir? Yeah, I am not talking about praidate. I get confused, sir. Sorry. It's okay. I am talking. Wrong with my understanding. So, let us hear. So, pra plus ejate, prejate. Here it involves all ekaranta dhatu. Ekaradi dhatu. Yeah. It is praidhate. Yes. It's not praidhate, it's predhate. And that was edhate only, sorry, the edhate as well and ingato dhatu, which was a vruddhi apvadar. Akaranta, ekaranta, it will become ekaranta. So this is the apvada of vruddhi. Pra and a should be a vruddhi, but it is cancelling the vruddhi and giving a pararupa sandhi. Only in upasarga yojanena eva bhavati. Am. Upasarga eva. A upasarga e o dhatu. Ekaradi okaradi dhatu. Dhatu only, correct. Pararupam also has to be only dhatu. Except that om thing on, sir. That is omangoscha sutram comes next. Next. In the vruddhi, we had studied about ina and edhate. Tra pla plus pra plus ejanam, prejanam. Para plus ejate, parejate. Para plus ejate, parejate. Akara, ekara, anayoh sthane ekara adesha. Atra pashyantu. Para ejate. Akara asti, ekara asti, anayoh madhye ek pararup adesha. Ekadesha sandhi. हाँ, pararupa ekadesha sandhi. Parejate. Pra plus oshati. Oshati to burn. So, proshati. These are all vruddhi sandhe apvadaha. Apvada. Upa oshanam. Uposhanam. Para plus oshati. Paroshati. Paroshati ityukte artham kim mahoday? Oshati is to burn. Paroshati.
ये पर उप है, ऊपर से बन है, पर है, उसके बाद में है, पीछे में है, ऐसा कुछ। Even oceanum is also, sir, burn. हाँ, ओशनम, यस, ल्यूट अंदर, विथ ल्यूट प्रत्यय। परोसति इत्युक्ते हिन्द्यां वयं जानीमः खाना डिस्ट्रीब्यूट करने को। वो परोसती है, सकार है, वो दंत सकार है, यहाँ पर मूर्धन्य हाँ शकार है। महोदय। औषधि अर्चति महोदय। किं नाम, किं वदति? औषधि ओषति इज टू बर्न, बर्न, टू लिट और बर्न। धन्यवाद। प्रोषति इज टू बर्न प्रकर्षेण, ओषति इत्युक्ते बर्निंग वेरी ब्राइटली और हेवीली। प्रोसति इत्युक्ते बर्निंग। So here same rule applies here. एकारंत एजादि धातु and ओकारदि धातु belong to a नाम धातु. If the नाम धातु is starting with ekara or okara and is followed by an upasarga ending with either akara or an akara. So महोदय, एतानि सर्वाणि पररूपसन्धि अस्ति वा? पररूपसन्धि। पररूपसन्धिः। आम्, पररूपसन्धेः नियमान् वयं गतवर्गे पठितवन्तः। तान् एव वयम् अभ्यासं कुर्मः। पूर्ववर्ण अस्ति उपसर्गात् अकारान्त अथवा आकार, एकारादि अथवा ओकारादि नाम धातु वर्णः स्तः। हाँ, तर्हि एकार ऐकार विकल्पेन वृद्धि भवति। पर पक्षे वृद्धि भवति, एक पक्षे पररूप भवति। वायों नमः अपि आएगा वेट करिए आई एम टेकिंग एवरीथिंग। थैंक यू। उप अधिकम एडकीयति, उपेडकीयति, उपैडकीयति। एडकीयति एडकम आत्मानम इच्छति अथवा एडकम इव आचरति। सामान्यरीत्या काम्यच्छेद प्रत्यय भवति, क्यंग प्रत्यय भवति, तर्हि एडकम इव आचरति अपि भवति, तर्हि एडकीयते इति रूपं भवेत्। एडकम इति किम्? एडकिं फ्रॉग, sorry, not frog, ram, sheep. Sheep. This rule is clear. पररूप संधि विशेष नियम उत्सर्ग सूत्रम अस्माभिः अधीतम्। एंगी पररूपम, अवर्णात् उपसर्गात् यदा एंगादि धातु अस्ति चेत् पररूपम भवति। एंगादि धातु मतलब औपदेशिक एंगादि धातु। इदानीं विशेष नियमः, यदा नाम धातु अस्ति तर्हि विकल्पेन पररूप भवति, पक्षे वृद्धि अपि भवति। इदानीं विशेष नियमः अवर्णान्तात्। इदानीं प्रत्यय उपसर्गः नास्ति, अवर्ण एव, अकार आकार। तस्मादनन्तरं शब्दद्वयम् ओतु एंड ओष्ठ। ओतु इत्युक्ते कैट, मार्जारः, ओष्ठ लिप्स। ओनली व्हेन दे आर कंबाइनिंग इन अ समास, then it will be have a pararupa sandhi. विकल्पेन pararupa भवति। अत्र पश्यन्तु, पूर्ववर्ण अकार अथवा आकार, परवर्ण ओतु अथवा ओष्ठ। यदा अनयोः मध्ये समासः भवति चेत् ओकार अथवा औकार भवति विकल्पेन।
So pakshe vruddhi bhavati, anyat pakshe vikalpena pararupa bhavati. Bimba adhikam. Otto means? Marjaraha, cat. Otto. Bimba adhikam oshtha. Bimboshtha api bhavati. Bimbauštha api bhavati. Bimba is a red colored fruit. So the lips of Vishnu or Rama has been equated with that particular red color fruit. So very red lips in that sense. Bimba oshtha. Bimbauštha. When this is a samasa. Samase satyapi ayam sandhi bhavati. When we are doing a samasa, then only it will happen. Individually, it will not happen. This point is not clear, sir. Can you explain this? Otu and oshtha. If you do a bimboshtha, bimba iva oshtha, karma dharaya samasa. So if you are doing a samasa, then there is a vikalpena vruddhi, vikalpena pararupa bhavati, vruddhi api bhavati. Parantu yada samasa nasti, tari kevalam vruddhi bhavati, pararupna bhavati. Akara okara pare kim bhavati. Akara following by an okara. It's always vruddhi because it is an H varna. So if it is now, what he specifies is when it is in samasa, bimba and oshtha will have an either a pararupa and or optionally vruddhi. Only in case of a samasa, the pararup sandhi is happening. If it is not a samasa, then only vruddhi is happening. That means we need to understand whether it is used for samasa or sandhi. Sorry, samasa or not. Yeah. So we can easily identify the two words because in the bimba, there is no pratyaya. Right? So when there is no pratyaya in the purva pada, 90% of the cases that this is asamasta pada. Atra pashyantu otuhu. Otuhu ityukte marjaraha. Atra yada shabda bhinnam asti. Shabdadvayam bhinnam asti. Separately. Ta sthulaha otuhu iti maya likhitavyam khalu. Sthulaha otuhu, because sthula will become a visheshana of otuhu. But in the samasta padam, sthula, I have dropped the supratyaya and added to the pratyaya, supratyaya to the parapadam. Padam following the sthula. So when the samasa is happening, the first word and the second word, the vibhakti of the first letter is dropped. Pratyaya lopaha bhavati Mahodaya. That is what vibhakti lopa. Vibhakti is the supratyaya. Like Rajah putraha. Raknaha putraha. Rajan shabda. Tatra shashti raknaha. Raknaha putraha. So, but what is the samasa? Rajaputraha. Because nakaranta padam yada pratipadikam asti purva padam asti tari nakarasya drop bhavati. Lopaha bhavati. So, Rajaputraha. Dasharathasya putraha. Dasharatha putraha. Okay. So, sya, from the Dasharathasya, we have dropped the sya and Dasharatha putraha. But I cannot, when I'm spelling Dasharatha putraha, I should speak without taking any break. Now I'm taking a break like Dasharatha putraha to make you understand that I have removed the vibhakti from here, vibhakti pratyaya. But Dasharatha putraha, it should be how it is to be spoken.
without taking any break. Viramam vina. बिम्ब इत्युक्ते रेड् रक्त वा? Ha, red colored fruit. अस्तु, धन्यवादः. Now here I have given an example. Asamase. Tava and Oshthaha. Atra tava iti षष्ठी vibhakti asti. It is clearly mentioned tava. So we can identify that tava is not a, this is not a samasta padam. And still we are going a mekaka sandhi because there is a scope of sandhi happening. So tava ushthaha. Here there is no pararupa. So tava is a षष्ठी vibhakti of Yushmat Shabda, isn't it? Tava and Oshthaha. So here we can see tava clearly. The vibhakti pratyaya we can see clearly. It is not dropped. It is not dropped. And accordingly, it is not a samasta padam. And hence, only the vruddhi adesha will be there. Tava ushtha. So this tava also can be, even that vibhakti can be dropped, no? Yeah, but if you want, then it will be yushvadoshta. Ah, yes. That is that. You have to take the pratipadikam. Correct? Yushvadoshta can be said? No? Yeah, Allowed? we can. Yeah. Dhanyavad Modi. That doubt I had. Thank you. But in the case of Asmata, in the Samastapadam, Ekavachanam should be only like that. Mad Asmata mat only, no, sir? Tad, mad and tad. And mad and tad only. Tadoshta. You cannot take Asmat and Yushmat. This is clear, this particular niyama. Now, this is a very particular gana given by Vartikkara Vararuchi. Shakandvadi gana. It is a gana containing about 10 to 12 words, which are ready-made words. And how these words are made by using Pararupa Sandhi only. So, now what is this peculiarity of these words? So, atra pashyantu, Shakandvadi ganasya shabdanam ti yada bhavati, tasmat pare kopi ach bhavet. Ti sangya sarve jananti va? Ti. Achontyadi ti. Achontyadi ti. Antim acha yada ajanta shabdaha ansi ter antim acha eva ti. Halanta shabda asti chet hala sahita ajvarnaha. So ajvarna following by the hal. Okay. So this is a T. So the entire T plus ach will be replaced by the ach. The varna which is following by the ach. The T will be replaced by the paravarna. Tatra pashyantu. Shakanduhu, Karkanduhu, Halisha, Manisha, Langalisha, Patanjali, Simantaha, Sarangaha, Ulataha, Etadashaha Shabdaha Tasya Tasmin Santi. So, Ajanteshu Antim Ajvarnaha, Halant Shabdeshu, Antya Hala Sahita Ajvarnaha. Like, say for example, Shaka, Atra Shaka iti maya sukrutam. Kakarottara akara asti. Kakarottara akaraha atra asti. Sa eva ti. Yes. Manas atra nakarottara akara asti tasmat anantaram sakara asti. Tari atra ti bhagaha as iti. So when this ti is followed by any achvarna, the ti bhaga and that achvarna is replaced by the paravarna, or which is that achvarna. Atra pashyantu. Shaka and Anduhu. Anduhu ityukte kupaha, a well, or dried up well. Shaka is a dynasty, Shaka dynasty, or the area occupied by Shaka.
अत्र ककारोत्तर अकार अस्ति, अत्र अन्धुः इत्यस्मिन् अकारादि अस्ति, किं भवनीयम्? अत्रापि हल अस्ति, अत्रापि शब्दः अस्ति, पदम् अस्ति, अत्रापि अत्र सवर्ण दीर्घ भवितव्यम्, परन्तु अत्र टी अस्माभिः ग्रहीतव्यम्। टी इति अकार, अत्र अकार अस्ति, अत्रापि अकार अस्ति, अनयोः स्थाने केवलम् एक एव अकार, पररूप अकार एव तिष्ठति। अत्र पश्यन्तु, अकार ककारोत्तर अकार अन्धोः अत्यपि अकार अस्ति, अनयोः स्थाने यः परवर्ण अकार अस्ति स एव तिष्ठति। पूर्ववर्णस्य अथवा यः टी संज्ञकस्य वर्णः आसीत् ते गच्छति। तर्हि पररूप एकादेशे शकन्दुः इति रूपं भवति। महोदय, शक इति किम् अर्थः? शक इज अ डायनेस्टी, पीपल, जैसे ग्रीक है, लैटिन है, इस टाइप का शक डायनेस्टी होती ना, हम लोग शक कैलेंडर आते हैं हम लोग, जैसे शक संवत होता है, जैसे विक्रम संवत होता है, वैसे शक संवत भी होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, मनस अधिकम ईशा, ईशा इत्युक्ते टिप, and manas manas is mind, the tip of basically manisha is the intellect, buddhi, manas adhikam isha। अत्र षष्ठी विभक्ति समास अस्ति, समस्त पदम, मनसः ईशा, मन की टिप अथवा बुद्धि की टिप जिसको बोलते हैं, षष्ठी विभक्ति अस्ति मनसः। तर्हि यदा वयं समासं कुर्मः, पूर्वपदस्य यत् प्रत्ययः सुप्रत्ययः अस्ति तस्य लोपः भवति। क्षम्यताम्। तर्हि अस् फॉलोइंग बाय एन अच् वर्ण ईशा, अस् एंड ई, अनयोः मध्ये ईकारः एव आदेशः। तो मन अस ईशा, सो मनीषा, मनसः ईशा मनीषा, मन की इच्छा जो बुद्धि होती है उसको, तो शार्प इंटेलेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। अवगच्छन्ति वा? शंका अस्ति? ये जनाः, हाँ, वीडियो जिसके नहीं खोला है कृपया, यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं, मेरा खुला है ना, दिखते हैं हमें। हाँ, आप दिखते हैं। हाँ, तो मुझे ये शंका है कि हलन शब्द है तो समझ सकता है कि ये टी से नया है ना, परंतु और ओ आया तो वो तो ये आपको दीर्घ संधि नहीं होती, तो ये कैसे ध्यान में रखना? ये आपको वो जो शकंदवादी गण में ये शब्द पड़ता है कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। यदि शकंदवादी गण के जो शब्द है उसको आपको रटना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा। 10-12 शब्द है, मैंने यहाँ लिखा भी है। वो आप याद रखेंगे, उसमें पररूप ही होता है। ओके, बाकी सबको छोड़ करके ये सब में 10-12 है, उसमें पररूप होगा। ओके, शकंदवादी गण मीन्स इट्स ए ग्रुप ऑफ शब्द, नावली, शब्दानाम् आवली अस्ति। 10-12 कदाचित् शब्दाः भवन्ति तस्मिन् गणे। गणपाठः अस्ति, तस्मिन्नेव वयं प्राप्नुमः। अत्र पश्यन्तु, पतत् अंजलि, पतंजलि अस्माकं मुनेः नाम अस्ति खलु। पतंजलि कथं नामधेयम् अस्ति? पतत् अंजलिः। अत्र पतत् इत्यस्मिन् टी भागः कः? अत्। तर्हि अत् अधिकम् अ, अनयोः स्थाने केवलम् अकारः आदेशः, सो पतंजलि। समझ में आया? मैं लिख के समझाऊं आपको? नहीं, ध्यान में आ गया। कूल अटा। अत्र यत् भवत्याः प्रश्नः आसीत्, अकारः अस्ति,
लकार उत्तर अकार अस्ति, अत्रापि अकार अस्ति आदौ, अनयोः मध्ये सवर्णदीर्घ भवेत्, परन्तु अत्र पूर्वपरयोः एक स्थाने पररूप एकादेश क्रियते। ये सीमित शब्द है क्या है? 10-12 शकंधवादी गण, हाँ शकंधवादी गण में 10-12 शब्द है। मार्त अंडः, मार्तंडः, सीमा अधिकम अंतः, सीमांत नहीं है, सीमंतः। आकार और अकार दोनों को हटा करके केवल पररूप अकार ही रहेगा। सीमा अधिकम अंतः, सीमंतः। अवगच्छन्ति वा सर्वे? सीमन्तः इत्युक्ते किं सर? बाउंड्री, पारं गच्छति। हाँ सीमायाः अन्तः, सीमान्तः। बट् सीमन्तपुत्रः इति अस्ति न? तदर्थमेव पृच्छति। First son they will call Simantaputran iti. I have to check if you are doing that. I have to check. In the note you have given that Sekanduhu, Patanjalihi, Kulata, you are the how they are derived, correct? सीमनो अंतः, सीमायाः अंतः, सीमन शब्द है, उसका अंत वही है, एंड। हाँ एंड। सीमायाः अंत, हाँ तो नहीं, सीमा शब्द है वो सीमन शब्द है, बेसिकली प्रातिपदिक है वो सीमन है, नकारांत। हाँ नकारांत, हाँ नकारांत है, तो इसका जो षष्ठी पंचमी होगा वो सिमनः होगा, सिमनः। इसमें गर्भाधान के समय में जो सीमंत सरकार होता है, इसका भी दिस इज ऑल्सो द सीमंत ओनली, डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड। You are given the कुलपदे कुल तथा अटा, किम अर्थ? अटा, अटा मतलब कुल को छोड़ के दूसरी जगह पर जाती है वो, आई मीन व्याभिचार करती है जो वो। और मार्त, मार्तंड है वो सूर्य का नाम है। हाँ परंतु मार्त भिन्नम अस्ति, मार्त केवलम अस्ति चेत् दिस इज द मार्तंड इज अ कंप्लीट रूप एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, दिस इज द आई कैन नॉट बाइफरकेट मार्त एंड अंड। धन्यवाद। सीमंत पूजन बोलते हैं वही है ना? हाँ सीमंत, दो मैंने बोला, दो सीमना अंतः भी है, सीमा का जो दायरा है, और जो संवादान जो गर्भाधान के बाद 6 महीना या 4 महीना में जो होता है वो उसी को भी सीमंत बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, हल अधिकम ईशा, हल मतलब लांगलम, जो प्लाव बोलते हैं जिसको, उसका टिप हलीशा, लांगलम। कर्क अधिकम अंधुहु, कर्कंधुहु। तार अधिकम अंगः, सारंगः, चातक पक्षी, मृग भी होता है उसका मीनिंग, ठीक है। वो सारंग धनुष, हाँ का धनुष का नाम, हाँ वो सारंग, हाँ उसको सारंग पाणी, इसको इसका नाम इसीलिए वो उसका धनुष का नाम था। लेकिन सारंग का मतलब ये होता है, सारंग चातक पक्षी भी होता है, हरिण भी होता है, मृग। सारंग शांग नहीं, शांग धनवा, शारंग, हाँ ठीक बात है, शारंग धनवा। हाँ पर ये जो हम लोग बोलते हैं बेसिकली अपभ्रंश होता है, यहाँ से कोई क्लियर जो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, सो 100-200 साल के बाद में श्रांग का सारंग हो जाता है। अभी जो पूछ रहा था, जो ओम और आंग, ओम आंगोश्च, ये सूत्र में
अवर्णात् परे यदा ओम शब्द अथवा आंग उपसर्ग आगच्छति तर्हि अनयोः स्थाने पररूप एकादेश भवति। अवर्णात् परे ओम शब्द अथवा आंग उपसर्ग तर्हि अनयोः स्थाने एक परवर्ण आदेश भवति, पररूप संधि। अब देखिए पदच्छेद, देखिए ओम आंगो द्विवचन है, सप्तमी द्विवचन। ओम आंग के परे रहने पर, यदा ओम आंगे परे अस्ति तरि, परे स्तः तरि तदेव भवति निमित्तम अस्ति। अनुवृत्ति कस्य अस्ति? अचि आत् पररूपम। सो ये एंगी पररूपम से सूत्र से अनुवृत्ति लिया है। आद गुण से आद की अनुवृत्ति आती है, आद मतलब अवर्णात्। पररूपम से यहाँ पर आता है, एंगी पररूपम से आता है। और अधिकार है, मेन चल रहा है वो संहितायाम एक पूर्व परयो हो। हम लोग अभी पूर्व परय एक एकादेश की संधि कर रहे हैं, तो यही अधिकार में चल रहा है अभी तक। ओम आंगो आतः पूर्व परयो हो एक पररूपम। आत परे अथवा यथा ओम अथवा आंग आगच्छति अनयोः स्थाने एक पररूप आदेश भवति। अत्र पश्यन्तु, अवर्णात् ओम शब्दे परे अथवा आंग शब्दे परे संहितायां पूर्वपरयोः एकादेशः भवति। इदानीं वयम् उदाहरणान् पश्यामः। ओम शब्द, अकार के बाद ओकार होने से क्या होगा? वृद्धि, वृद्धि रेचि। तो अत्र किं तां बाधित्वा अत्र पररूप एकादेश क्रियते। अवर्ण के बाद में यदा ओकार है, ओकार मतलब ओम शब्द है, ओकार खाली नहीं, ओम शब्द का ओकार है, तो पररूप एकादेश होगा। अत्र शिवाय ओम नमः, तो शिवाय अत्र अकार अस्ति, तस्मादनन्तरम् ओकार अस्ति। सो वृद्धिरेचि अनेन वृद्धि भवितव्यम्, परन्तु तद् बाधित्वा पररूप एकादेशः कृतः। शिवाय ओम नमः। का ओम अवोचत्, का ओम अवोचत्। ओम शब्द किसने बोला? का ओम अवोचत्। कोम, का और ओम मनयो मध्ये पररूप एकादेश, कोम अवोचत्। इदानीम् आंग उपसर्ग ध्यानेन पश्यन्तु। अत्र शिव प्लस आंग प्लस एहि, इहि। इहि इत्युक्ते गच्छति, गच्छ इत्युक्ते। नाउ आंग इत्युक्ते आगच्छति, गच्छति आगच्छति। इदानीम् आ अधिकम इहि। सो सबसे पहले क्या होगा? उपसर्ग और धातु के बीच में संहिता नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः। संहिता कुत्र नित्या? नित्या धातु उपसर्गयोः। धातु उपसर्ग में संहिता नित्य होगी, तो उसमें ऑप्शन नहीं है आपको। तो आ और ई मिलकर के सबसे पहले गुण संधि होगी, तो ए ही हो गया गुण संधि के बाद। अब शिवा और ए ही क्या वृद्धि होना चाहिए, तो उसको वृद्धि को बांध करके शिवे ही पररूप एकादेश। अत्र पश्यन्तु, आंग इति उपसर्ग अस्ति। यदा वयम् आ इति वदामः खलु, आगच्छति, तर्हि आगच्छति इत्यस्य आंग इति सम्पूर्णमस्ति, ङकारस्य इति संज्ञा भवति। तर्हि आगच्छति, सिमिलर्ली अत्येवि अस्ति आंग एहि इहि। तो एकारस्य आकारे परे यदा इकार आगच्छति, इक वर्ण अस्ति, तर्हि अनयोः मध्ये आद्गुणः इत्युक्ते आद्गुणः सूत्रेण गुणसन्धि भवति, अनेन एकारः आदेशः भवति। इदानीम् एहि वयं प्राप्नुमः।
वयं तिङन्तरूपं प्राप्नुमः एहि। शिव एहि तर्हि शिवेहि इति अत्र रूपं वयं प्राप्नुमः, पररूपं प्राप्नुमः। Similarly, ava adhikam a adhikam ihi, avagacchati, it's like avehi, sada a ehi, sadehi, and udha, a and udha। ये आंग के बाद में कोई भी उपसर्ग हो, कोई भी धातु हो सकती है, और यदि एज एज यदि कोई अचिवर अजादि धातु होगी तो इसमें संधि होगी। आ ऊढ़ा, सत्र आ और ऊ के बीच में संधि होकर के ओ हुआ, और अद्योड़ा, अद्य ओढ़ा, आ और ऊ को गुण संधि हुई और ओकार आदेश हुआ तो ओढ़ा हुआ, और बाद में अद्य और ओढ़ा अत्र पररूप आदेश, अद्योड़ा। ये स्पेशल कुछ नियम है, ये आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। Otherwise, by mistake, we get into the vruddhi. हाँ, by default is the vruddhi. Means we should keep all these features into the mind. Then when they come, we need to. Those are exceptions. Yeah, these are exceptions. You just have to remember these particular words. और उसके बाद में कुछ नहीं है। महोदय महोदय अत्र आद्य टी संज्ञा भवति। इसमें आद्य ओढ़ा। हाँ, आंग उपसर्ग है और ऊढ़ा है, तो आ और ऊ मिला करके गुण संधि हो गई, कहीं ओढ़ा हुआ, ये दोनों। अद्य भी छोड़ दीजिए, आ और ऊ का ओढ़ा हुआ। अब अकार और ओढ़ा के बीच में पर रूप संधि है, वृद्धि संधि होनी चाहिए थी लेकिन पर रूप हुई। जी, अद्योड़ा, अद्यौड़ा नहीं है, अद्योड़ा। From left to right, we not do the sandhi adya plus a, and no, then oda. You have to first do the sandhi of the upasarga and dhatu to make a final tiganta padam, and then you can convert this to adya, because adya is not an upasarga here. Even if there is an upasarga, then you have to first make a sandhi between just the preceding upasarga, and then go from left to right. Sorry, from this from my right to left. Okay. From adya we cannot do. No. In that case, it will be adya. Adya. Like Mohdaya, in maths we do board mass. Here also we do. Yeah, both mass. Right. तदेव वक्तुम् इष्टवती, तदेव अहमपि चिन्तितवती। He is again in gato, no sir? In gato. Which one? Ihi, हाँ, लोट लकारे. Bracket first. One mass. That is why I put it in the bracket, so that you can understand the where is sandhi happening first and when the sandhi happening in the second instance. Is this clear? ओमांगोश्च अवर्णात् परे यदा आंग अथवा ओकार आगच्छति, ओम अथवा आंग उपसर्ग, अनयोः मध्ये पूर्व रूप भवति। Now, if ang is following by any dhatu starting with a swara, so you have to first make the sandhi there, and whatever be the result, it will be connected with the word preceding it. Okay? Mahoday, this ihi is always preceded by ang upasarga? No. Ihi is gaccha. So it's like that. Shiva ihi will also be shivehi, no? No, that is by default, but here it is an ang upsarga. So if it is a, how would you treat?
Then first is A and E. Now the root changes to A. It is not A. Okay. It is the root changing to Ehi. Now, if it is Ehi, the Shiva and Ehi will become Shivaihi by Vruddhi Sandhi. But here Vruddhi Madhitva Pararupa Sandhi kriyate. Shivehi. धन्यवाद. So all this I have sent. This is one patat iti is a special example. Atra at iti drashtavyam. Tatra ti sanya. At iti sanya, ti sanya followed by an ikara, which is an ach. Anayoh madhye pararupa ekadesha. So patiti iti rupam bhavati. Pataditi nasti. Patiti. Parantu if it is done twice, patat patat plus iti. So patat pateti. In this case, there is only the takara is getting the replacement. Takara and e. Anayoh sthane pararupa ekadesha bhavati. So patat, patiti, pateti, and of course jashtva patat patediti. Patat patediti. First is the pararupa and one is the jashtva. Second case, jashtva also to be considered. Yeah, it is Mahodaya, optional. padeti, pateti, I don't understand. Just a moment. Give me time. Avikam. एक निमिषं मह्यं ददातु. I was trying to stop the annotations, so I was just hunting for it. Mahodaya, just deleted all the drawing annotations, Mahodaya. Okay, I've just deleted that. So we have the similar oshtha like dantoshtha, the uchcharana sthana, dantoshtha as well as dantaushtha. Both are correct. न दृश्यते. Darshay. You are not able to see the screen? Yes. दिखते हैं लेकिन Dantostam did not come. No, that's I'm coming. Yes, you are only telling. Yeah, now it came. Correct. Danta oshtha. This is an abhyasa. Danta adhikam oshtham. So दंतौष्टम ना. Dantostham, dantaushtham. Ubhayopi sathu. Like a bimbostam. हाँ. ये उसी का है. ओष्ठ शब्द के साथ में जो भी अवर्णात् परे यदा ओष्ठ शब्द आगच्छति. हाँ. कर्क अधिकम अंधु. हाँ, कर्कंधु. अव अधिकम आ अधिकम इहि. अवेहि. आ प्लस इहि. अवेहि. अवेहि. आ प्लस इहि. या. पटत अधिकम इति. पटेति. पटतेति. Patateति. Patiti. 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 At plus e in the place of at e comes. So patiti. 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 Upa adhikam oshati. Uposhati. Uposhati. Upadikoshati. Tava. Poshati. Oshati. Danta. First word, danta adhikoshtam, dantaushtam. हाँ. दोनों ही इसमें दो शब्द ही है ओनली. ओष्ठ और ओतु. मैंने आपको दो शब्द ही के लिए बोला था समास में. ये ओषति शब्द के लिए नहीं बोला था. Mahodaya, here upa adhikam oshati. So here upa, is it a samasa pada or asamasa pada? Upa is an upasarga plus oshati. Okay. Just a moment. Ehi padam is again ehi is a a plus ehi will become ehi.
Now, ava and ehi, it should be avaihi by vruddhi sandhi, but tad badhitva avehi iti pararupa ekadesha bhavati. Avehi. Good. Just to know. Avehi, to know. This comes in the Raghuvansham, in the Kovidastare. So, sandhim vibhajata. Prejate. pra adhikam ejate. Kanthostham. Kanta adhikam oshtam. Manisha. Manas plus Isha. Manas Isha. पुनः एक बार हम कुमुद जी फिर से एक बार मनस नहीं कुमुद जी ईशा। मनस अधिकम ईशा ईशा। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम। सारंगः सारंगः उत्तमम्। इदानीम् इदं सूत्रं वयं प्रत्येकस्मिन् रविवासरे पठामः खलु। धातोः यदा वयं रूपाणां निर्माणं कुर्मः अतो गुणे इति पररूपसन्धिः आगच्छति। अवर्णात् परे यदा कोऽपि गुणवर्ण आगच्छति तर्हि अनयोः स्थाने एक पररूप एकादेश भवति। अवर्णात् अपदान्त, तो अपदान्त, अभी तक हम लोग पदांत में देखा था, अब अपदान्त। अपदान्त यदा अस्ति अपदान्तस्य ह्रस्व अकारे यदा फॉलोइंग बाय गुणवर्ण। व्हाट आर द गुणवर्णस कुमुद भगिनी? गुणवर्णस गुणवर्ण अदेङ्गुणः। हाँ, तर्हि अपदान्त अतः अपदान्त अतः गुणे पूर्वपरयोः एक पररूपम्। गुणे इत्युक्ते गुणवर्णे परे। अतः अत्रक्त अत इत्यस्य पंचमी विभक्ति ह्रस्व अकारे परे। अत्र पश्यन्तु अपदान्त इत्युक्ते उपसर्गः भवति। नहीं, उपसर्गस आर ऑलवेज पदम। अपदान्त अकारांत हम लोग जैसे धातु का रूप निर्माण करते हैं तो सबसे पहले भू को भव किया। हाँ, तिगंत है अभी मैंने, जैसे पठ और अंति, पठ और अंति। तो क्या होगा? पठंती, पठांती नहीं होता है क्योंकि पठ अभी तक उसका पद नहीं हुआ है। जब हम लोग पठंती बनाएंगे तब वो तिगंत पद होगा। अपदान्त है। हाँ, पठ का जो आकार है ठकार परे यह आकार अस्ति सह अपदान्त आकार फॉलोड बाय अजादि प्रत्यय अंति। जो अंति सूत्रम जी अंति करेक्ट। अत्र पठ प्लस शप प्लस जी, पठ प्लस अ प्लस अंति झोंत सूत्रेण पठ प्लस अंति अत्र पठन्ति। अनयोः मध्ये एक वर्ण आगच्छति। सो आई हैव रिटन ओनली अ सिंगल। दिस गोस बेसिकली पूर्व परयोः वर्णयोः स्थाने एक पररूप आदेश भवति। एतावत् पर्यन्तं केवलम् अन्ति अन्ति एव अस्माभिः पठितं खलु। इदानीम् अपदान्ते यदा एकार आगच्छति तर्हि लभ प्लस इट, लभ प्लस लट, लभ प्लस इट। इट इत्युक्ते कः प्रत्ययः? उत्तम पुरुष एकवचनं न? उत्तम पुरुष एकवचनं। लभ प्लस शप प्लस ई, लभ प्लस अ प्लस ए, तित आत्मने पदानां टेरे। लभे, लभे अत्र अकार अस्ति तस्मादनन्तरम् एकार अस्ति विच इज गुणवर्ण। दिस लभ विच इज नॉट अ पदम,
but it is an akaranta anga, followed by a guna varna, which is an ekara. So anayoh sthane ekara adesha, parvarna adesha. Labhe. It is not labhai, labhe. Okay. A plus A. उत्तम Labhe. पुरुष एव हाँ. अवगच्छन्ति वा सर्वे? We wrote this labha plus A, labhe, we wrote this sutram also, but I never understood it. Apadanta is again labh. Apadanta akarat ekare. I was परे thinking, अतो गुणे इति उभयोः पररूप एकादेश. Padam and apadant. This is a very important thing. Padante, apadante, this will come in the Hal Sandhi and the formation of the Tiganta Rupam. I have two doubts. Apadanta means labha, because as long as no as long as nothing is added, he thinks it is apadanta. Similarly, earlier in the discussion, the sad is a padanta. Which one? Earlier, long back, you have briefed about the sad in the same class, today's class. Sad is becomes उत्तम पुरुषस्य एकवचनं महोदय. That's why labha. that is like he is He eva bhavati, you know. This is sada. Sada a ehi. Yes, sir. Yeah, here sad. This is a padam. This is no akara here. It is a halanta. It's a padam. But it's a padam. Plus this is not a akara here. I know, sir. But sad padam is there. Huh? Sad. It is not a. This is a padam, and because these all nipat sangyakaha, these are all padams. Okay. But the vibhakti has been dropped. Okay. Not understood. Sorry. Not understood, sir. कोई भी आप निपात लीजिए, कोई भी आप उपसर्ग लीजिए, प्र परा, उसका कोई मीनिंग नहीं है. But these are all nipat sangyakaha, which are all padam. Right, got it. Firmly cha va iti, cha va ये जो चीज है वो अव्यय है, but these are all padams. These are not apadam. Got it. So vayam akare apadant akare pare akarasya udaharanam drashtam पठ वक्तायां वाचि पठन्ति इति रूपम अस्माभिः प्राप्तम्. एतस्मिन् कापि शङ्का अस्ति वा? अन्तिम न एतस्मिन् नास्ति. नीचे लभ धातु है ना, तो प्रथम लभ पूर्ण चाहिए ना, हलंत नहीं चाहिए. हाँ, तो मैंने वो बोला कि अकार को मैंने हटा करके एकार कर दिया. दोनों के स्थान में एकार आदेश, पररूप एकादेश लिखा है. यहाँ पर देखिए अकार लिखा है और एकार दोनों लिखा है. तो ये दोनों के स्थान में एकार आदेश हुआ. तो यहाँ पर लिखा है अपदांत अकारात एकारे परे अतो गुणे उभयो पररूप एकादेश एकारः. ओके. सो ये दोनों के स्थान में एकादेश एकार हुआ. तो लभ जो हलन था उसके साथ में एकार मिल गया और लभे ये रूप हुआ. मुझे लगा लभ और प्रथम ए मिला गया. ठीक है. अ और ए दो था, लभ और ए. ठीक है. तो पहला लभ में जो अकार था और इसमें जो एकार है, स्वरादि प्रत्यय है, तो उसमें दोनों में एक पररूप एकादेश हुआ. तो आगे जो लभ का जो अकार था वो चला गया और एकार ही रहा दोनों के स्थान पर. तो लभे, इसलिए मैंने यहां पर भ को हलंत किया है. अकार चला गया. ठीक है. अब एक स्पेशल संधि हम लोग पढ़ेंगे, which is called avangadesha sandhi. Avangadesha sandhi, which is very specific sandhi and happens with go shabda only.
Go Shabda. And this is an optional Sandhi. Avanga Sphotayanasya iti Sutram. So this particular thing is by default Go Agram पूर्व रूप भी होता है, अवंग आदेश भी होता है और प्रकृति भाव भी होता है. Three roops are there in this case. Okay. Avanga Sphotayanasya. Sphotayan was a grammarian before Panini. So he has taken his sutras also and give us an optional roop. There is Vibhasha. You can use this also optionally. Okay. So this is Prakrutya. So it is प्रकृति संधि जो हम लोग बोलते हैं, प्रकृति भाव संधि इसी से सूत्र से मिलती है, उसी की अनुवृत्ति आती है. और विभाषा ऑप्शनल. वाह. पदांतात विभाषा क्या महोदय? ऑप्शनल. वाह. पदांतात गोहो अचि. गो के बाद यदि अच वर्ण होगा, पदांतात गो वर्ण. ये आप ध्यान रखिए, पदांतात गो वर्ण, उसके बाद कोई भी अच वर्ण होगा तो उसको अवंग आदेश होगा ऑप्शनली. और ये पद कहां पर होता है? जब आगे समस्त पदम बनता है. ये समस्त पदम का ही है ये सब, क्योंकि समास से संहिता नित्या अस्ति. नित्या धातुपसर्गयो वाक्ये तु विवक्षाम अपेक्षते. अत्र गो शब्द पदांते और अच, कोई भी अच, उसको अवंग आदेश होता है वा विकल्पे न. सूत्रम क्या पढ़ा हम लोग ने? अवंग स्फोटायनस्य 61123. 61123. एक निमिष. अब फोटायनस्य. ओके. हाँ, टंकण दोष. अत्र पूर्ववर्ण सर्वत्र गो इति भवति. What is the meaning of Spotayana? Spotayana was the name of a grammarian. Name. वैयाकरणः आसीत्. पाणिनेः पूर्वं जातः सः. So he has also coined some sutras, and Panini has taken some sutras from he and given that you can do this, but optionally. Shakalya something also. लोप शाकल्यस्य वयं कृतवन्तः खलु. लोप शाकल्यस्य तद्वदेव. महोदय स्फोटक इत्युक्ते कोई बताइए. पटाखा. नहीं, स्फोटक वो अलग है. देखिए, ये हमेशा समस्त पदम होता है. अब आपको मन में डाउट होगा कि गो शब्द पदांत में कैसे आया. कथम आगच्छति पदांते? गो शब्द पदांते कथम आगच्छति? पदांते गो. गो मतलब मालूम है ना आपको सब? गाय. हाँ, तो पदांत में कब होगा? समस्त पदम एव. हाँ, समस्त पदम में आगे शब्द होगा. तो जैसे गो अग्रम लेते हैं, गो का अग्रभाग, गो हो अग्रभाग, गो हो अग्रम. अत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति. षष्ठी. गो हो अग्रभाग गो अग्रम. समास से जाते तस्य संदेह अत्र प्रत्ययस्य लुक् भवति. अनंतर गो इति प्रातिपदिकं तिष्ठति. परंतु अयं पदमेव अस्ति. दिस इज नॉट अ प्रातिपदिकं बट पदमेव. But he gets the original pratipadikam rupam. This is a padanta. This is a padanta. Here go in the Panchami and Shashti, this go shabda, it is like goho in both the cases. Yes, sir. Atra, when it is used in the purva padam in the samasa, that vibhakti is dropped. Yes. But that doesn't mean
that it has got the original Pratipadik form. It's still a padam. Ragnah putra, if we say Rajaputra, so Raja is still a Pratipadik, is still a padam. Okay, just we have dropped the nakara from it. Prakriyayam lupta bhavati. Go plus agram, atra okarasya sthane avangadesha. गो चर्मा गो मूत्र ओकार के गो स्थान दुग्ध पर अवंग. अवंग. तो गो अव. तो अब देखिए गो और अग्रम, गोग्रम, गव अग्रम, और उसके बाद में सवर्ण दीर्घ संधि गवाग्रम. इसमें गवाग्रम भी आएगा, पूर्व रूप संधि भी आएगी. गोग्रम. पूर्व रूप संधि का किसी को याद है सूत्र? अवग्रह आता है ना. सूत्र पूछा मैंने. अवग्रह तो ऑप्शनल है. नहीं, सूत्रम पूछा मैंने. एंगी पदार्था दति उत्तमम पल्लवी भगिनी. गव अधिकम अग्रम. अत्र गो का मैंने अवंग किया. अवंग में से गंकार की संज्ञा हुई अव है. इट इज नॉट अव बट अव. वकार फॉलोइंग बाय अकार. कीप दिस इन माइंड. गव plus agram. Go has become gava. Go has become gava because okara has been replaced by ava and not ava. Ho yava yavo वाला अव नहीं है, ये अव है. It's called avangadesha. Okay, right. So अवंग, right sir. हाँ, अवंग में से गंकार की संज्ञा हो गई, अव बचा, गव और अग्रम गवाग्रम. अत्र यदा अवंगः न भवति तर्हि गोग्रम पूर्व रूप संधि. अंगा लशक उत्तदिते से गच्छति. हाँ, नहीं. अब तो आप बोल ही लीजिए सूत्र, सब बोलिए. चलिए. बोल के उलझ गए. अब लता जी आपको कान पकड़ेगी आपकी. अंगा छाया जी, आई एम सॉरी, छाया जी. आदेशः तेरिलिए how it came. This is an आदेश, अवंगादेशः. So go अवंगादेशः अस्ति, अवंगादेशः अस्ति. अंगा गच्छति. हाँ, अंग गच्छति. केन सूत्रेण गच्छति? आप अंतिम में है और हल वर्ण है, कौन से सूत्र हो सकता है? हलंत्यम. बस फिर खत्म हो गया. देखना ही नहीं है कुछ इसमें. यदि आगे में है तो आपको टेंशन करने का है कि कौन सूत्र हो सकता है. पीछे में तो एक ही सूत्र लगता है. हलंत्यम. तो गवाग्रम यदा अवंगादेश भवति, यदा अवंगादेश न भवति तर्हि गोग्रम. Sir, go plus ava, how it will become gava? I cannot understand that. हाँ, एक निमिषम हम करा. वर्ण दीर्घ संधि How it is becoming? I don't understand. Okay. Go is ig plus o plus a. एक निमिषम, कहाँ लिखा मैंने? Ga plus o. So that o is becomes changed to ava. Ig plus o, ig halantyam ga. Go plus ava. agram. Agram in between ava comes. हाँ. So I can write ga plus o plus a plus gram. Ava you told no? I'm coming. Okay. Oh, so a plus gram. Okay, that only you have split. हाँ. So I am just changing go. I have just split the ga. Why I have split? Because it has to be followed by an ach varna. Yes. So agram का a को मैंने अलग किया. Yeah. It will not change. So इदानीं ग ओकारस्य स्थाने अव आदेश भवति. So ग अव अग्रम. So
हाँ, अब बताइए सर। यस सर, गवाग्रम। ओके सर। हाँ, गवाग्रम, ठीक है। ओके ओके, इन द प्लेस ऑफ वो our comes. ओके सर। Provided akaram is there. That is वो agra. भी अचवर्ण, अचवर्ण, Any acharna. Okay okay. Go plus go following by any अचवर्ण. Go plus agram. That means if I say gavagram is also accepted and goagram also is also हाँ, and also पूर्व रूप संधि is also accepted. Yeah. Right. Right. विकल्पेन भवति। विकल्पेन। और इसमें आपको एक, जैसे मैंने पूछा था, प्रकृति भाव संधि करेंगे तो उसमें और स्पेशल नियम है गो और अग्रम का। गो अग्रम ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें समझ में आया? मैं दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए। ये तो समझ में आया ना, मैंने आपको जैसे दिखाया गवाग्रम कैसे हुआ और गोग्रम कैसे हुआ। पूर्व रूप संधि एंड अत्र अवंगादेश संधि। अवंगादेश संधि महोदय बहवः निर्माणाय भवति अथवा गो शब्द एव। ओनली गो शब्द। गो शब्द फॉलोइंग बाय अचवर्ण, and that go shabda, it has to be a pada. So the pada can happen only in the samasa. So samase पूर्वपदे सति तर्हि तस्य विभक्तेः लोपः भवति। ओके, अस्तु। अत्र गो अधिकम ईशः। So this is not only akara but ikarah. ईकारः। अत्र गव अधिकम ईशः अवंगादेशे गवेशः गुणसन्धि। यदा अवंग न भवति तर्हि गवीशः अवादेश संधि। So this is अत्र एचो यवा यावः। अत्र पश्यन्तु, एचो यवा यावः भवति अत्र। So this is not a purva rupam, because purva rupam happens only in case of followed by rasva akara. Ikara okara following by rasva akara. But if it is not a rasva akara, then normal yantavanta sandhi and avangadesha. So this is an go plus ishaha. This is an if then avangadesha is there. Gava and ishaha avangadeshe krite. Gaveshaha. Gava and ishaha, then you can further do the sandhi gaveshaha. And यदा अवंग न भवति गो एंड ईशः, इसमें क्या संधि हो सकती है? अवादेश संधि। एचो यवा यावः, so go अव। That is what I was trying to tell, go and ava. And here is go and ava. This is ava. And accordingly, ava by following by ikara, gavishaha. And here it is gaveshaha. Go plus odanam. Gava plus odanam avangadesha. Gavaudanam. वृद्धि संधि। अत्र गो प्लस ओदनम अवावादेशे कृते गवोदनम।
So here these are optionals, but these two are compulsorily avangadesha sandhi. These two words only. Go plus akshah, gavakshah. And go plus indraha, gavendraha. This is compulsory avangadesha. So, Mohoday, we will use the same sutra there. Yeah, avang sphotayanasya. But in this sutra, this is a compulsory avangadesha. And there, and apart from these two words, all other words following by the padanta go, any following by achvarna, it will have an avangadesha optionally. Plus akshaha, there is a possibility of the pararupa sandhi, no? No, gava is a padam. You're right. And aksha. So when we are doing a samasa, the pararupa, even though the vibhakti is dropped, but it still remains the padam. Unless and until it remains the padam, we cannot join. Okay. When we do the samasa, we have to join two subantas, not two pratipadikams. So when do Dasharatha putraha, so Dasarathasya and putraha, both are subanta padam. Neither of them is a pratipadikam. Even though the purva padasya vibhaktehe lopa bhavati, parantu tasya padasanya to bhavati eva. You want to study further? Prakriti bhava sandhi? Or shall we stop? Stop. Stop. तर्हि एतावत् पर्यन्तं यत् अधीतम् एतस्मिन् कापि शङ्का अस्ति वा? इदानीं नैव महोदय, किञ्चित्